स्वागत है आप सभी का। महाखंडक के आगे के पाठ को हम करेंगे। बनते जी उपस्थित है, बनते जी से आज्ञा लेते हैं। दीपक जी आप शेयर करेंगे और शुड आई शेयर? आप ही कर दीजिए, निकल जी। ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा एक बार हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। हम पढ़ रहे थे कुलपुत्र यश की गाथा, पवज्जा कथा, जिसमें कुलपुत्र यश का अ, भगवान बुद्ध के समय तवज्जा होती है। उसके उपरांत फिर अम, यश के पिता आते हैं और उनकी माता और उनकी एक्स वाइफ वो सबसे पहले ले फॉलोवर बनते हैं बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाने वाले। उसके उपरांत उनके 4 मित्र आते हैं। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजी और गवम्पति। वो भी आ, प्रवज्जा लेते हैं और इस प्रकार टोटल 11 अरहंत हो गए थे, जिसमें 5 पंचमुखी भिक्षु थे और 4 यश के मित्र थे, 5वें खुद यश थे और 11वें भगवान बुद्ध। आगे फिर हम पढ़ेंगे इधर से। तो मैं पाली पढ़ दूंगा। दीपक जी आप इंग्लिश कर दीजिएगा। हाँ जी। असो सुंखो आयस्मतो यशस्य पय्यासमत्ता गिः सहायका जानपदा पुब्बानुपुब्बकानं कुलानं पुत्ता यशो किर्कुलपुत्तो केशमसुं ओहारे त्वा कासायानि वत्थानि आच्छादयित्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजितोति श्रुत्वान्नेषम् एतद्होषि नहि नून् सोऽर्को धम्मविनयो न सा ओर्का पवज्जा यत्थ यशो कुलपुत्तो केशमसुम् ओहारे त्वा काषायानि वत्थानि आच्छादयित्वा आगारस्मा अनगारियं पव्वजितोति येन ते येन आयस्मा यशो तेन उपसंक्रमिन्सु उपसंक्रमित्वा आयस्मन्तं यशं अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठंसु अथ को आयस्मा यशो ते पय्यासमत्ते गिः सहायके आदाय येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निषिन्नोऽखो आयस्मा यशो भगवन्तं एतद्वोच। इमे मे भन्ते पय्यासमत्ता गिः सहायका जानपदा पुब्बानुपुब्बकानं कुलानं पुत्ता। आप पढ़ दीजिए जो स्क्रीन पर है। रीडिंग ये कह रहे हैं ना इंग्लिश में। जी 50 of Isa's friends from leading families in the countryside also heard that Yessa had shaved off his hair and beard and put on orchard robes and gone forth into homelessness. They too said to one another, "This must be an extraordinary spiritual path, an extraordinary going forth for Yessa to have done this." And they went to Yessa and bowed down to him. Yasa then took his 50 friends to the Buddha. He bowed
sat down, and said, Sir, these 50 friends of mine are from leading families in the countryside. हम लोग सामान्यतः पाली और इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। अगर किसी को हिंदी ट्रांसलेशन की आवश्यकता है तो आप वर्चुअल हैंड रेज कर दें, फिर हम उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेंगे। इमे मे भन्ते पय्या समत्ता गिहि सहायिका जानपदा पुब्बानुपुब्रकानन् कुलानन् पुत्ता इमे भगवा ओवदतु अनुशासितुति तेषं भगवा अनुपुब्बिं कथं कथेसि संयथिदं दान कथं शील कथं सग कथं कामानं आदिनवं ओकारं संकिलेशं नेत्रं मे आनिशंसं प्रकाशेसि यदा ते भगवा अय्यासि कल्लचित्ते मुदुचित्ते विनिवरणचित्ते उदग्रचित्ते प्रसन्नचित्ते अथ या भूतानं सामुं कृषिका धम्मदेशिना तं प्रकाशेषि दुःखं समुदयं निरोधं मग्गं शय्यथापि नाम शुद्धं वत्थं अपगतकालकं सम्मदेव रजनं पटिगणहेय एवमेव तेषं तस्मिन्नेव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्षुं उदपादि यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मन्ति। Please instruct them. The Buddha then gave them a progressive talk on generosity, morality, and heaven. On the downside, degradation and defilement of worldly pleasure, and he revealed the benefits of renunciation. When the Buddha knew that their minds were ready, supple, without hindrances, joyful, and confident, he revealed the teaching unique to Buddhas: suffering, its origin, its end, and the path. And just as a clean and stainless cloth absorbs dye properly, so too, while they were sitting right there, they experienced the stainless vision of the truth. Anything that has beginning has an end. ते दिट्ठ एक धम्मा। एक मिनट, वो उद्दग चिते जरा एक मिनट खोलना लाइक। कौन सा बोला आपने? ये वाला? हाँ, ये है ना, कल चित्ते मुदु चित्ते विनिवरण चित्ते उदग्ग चित्ते प्रसन्न चित्ते। प्रसन्न चित्ते समझ में आ गया। उदग्ग चित्ते, उदग्ग चित्ते मीन्स ऊपर में लिखा है जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट। जॉयफुल, और विनिवरण चित्ते हिंड्रेंसेस है, या और मुदु चित्ते जॉयफुल प्रसन्न चित्ते हो जाएगा। मुदु चित्ते, उद्धव चित्ते जॉयफुल मुदु इज चित्ते होगा ना, कॉन्फिडेंट। हाँ, मुदु चित्ते होगा ना जॉयफुल तो। प्रसन्न चित्ते इज जॉयफुल, उदग्ग चित्ते शुड बी कॉन्फिडेंट। मुदु चित्ते क्या है? मुदु तो मृदु चित्त हो गया ना, सॉफ्ट हार्ट। कहाँ लिखा है? ऊपर ट्रांसलेशन में आई देर, थिंक उसमें सपल देखिए उसमें सपल लिखा है उसमें सपल। रेडी सपल। अच्छा, अंग्रेजी शब्द सपल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपल? आई डोंट अंडरस्टैंड। इवन आई थिंक शुड बी मृदु चित्त। सपल, सपल अंग्रेजी सर, आप सर कुछ है। मृदु चित्ते का मतलब है सफल। क्या हुआ? सपल का सफल मतलब क्या सफल होता है? मतलब जो आसानी से बैंड हो सकते हैं, आसानी से बदल सकते आसानी से बदल सकता है जो चित्त है। हैं। ओके। और विनिवरण चित्ते जो है वो मतलब हुआ ये निवरण के बगैर। विदाउट हिंड्रेंसेस। जी।
and confident. Udag is a new word, sir. Udag with Udagga means joyful. Udagga means joyful. Udik नहीं, means पसंद चित्ते है ना सर, उधर लास्ट में. Udagga means joyful. Prasanna is used both for confidence as well as for happiness. Correct, Both sir. meanings. thank you. ते दिट्ठ धम्मा पट्ठ धम्मा विदित धम्मा परियोगालह धम्मा तिन्न विचिकिच्छा विगत कंठं कथा वेसारज्यपत्ता अपरपच्चया सत्तु शासने भगवन्तं एतद्वोचुं लभेयाम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पवज्जं लभेयां उपसम्पदन्ति एथ भिक्खवोति भगवा अवोच स्वाखातो धम्मो चरथ ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्तकिरियायाति सावतेसं आयस्मन्तानं उपसम्पदा अहोसि अथ को भगवा ते भिक्खु धम्मिया कथाय ओवदि अनुशासी ते सं भगवता धम्मिया कथाय ओवदीयमानानं अनुशास्यमानानं अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमिञ्चिन्सु तेन खोपन समयेन एकषष्ठी लोके अर्हन्तो होन्ति. They had seen the truth, had reached, understood, and penetrated it. They had gone beyond doubt and uncertainty, had attained the confidence, and had become independent of others in teachers' instruction. And they said to the Buddha, Sir, we wish to receive the going forth in your presence. We wish to receive the full ordination. The Buddha said, Come, monks. The teaching is well proclaimed. Practice the spiritual life to make a complete end of suffering. That was a full ordination of those venerables. Then, as the Buddha instructed those monks in the teaching, their minds were freed from the corruptions through letting go. And there were 61 perfected ones in the world. पय्या सही 1 minute, can you hold it up? कल हम चर्चा कर रहे थे becoming independent of teacher, इसमें independent of others in the teaching. So you can see that word is used here for Sotapannas. Now, so the other thing I'm noticing is that it seems to suggest कि जो Four Noble Truths का paradigm है, that is used as a breakthrough paradigm. And then from Sotapati Phal to Arahantship, it simply says, Further the instructions. yeah, now that's vague, है ना? We don't know exactly what it was. But आप ये बताइए, there are two questions I have. So, ये और जगहों पर भी आता है इस तरह के का जिक्र कि Four Noble Truths paradigm is used for that. That's question number one. And question number two is that पहले भी सुरेंद्र जी ने पूछा था शायद आपसे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. I wasn't there in that session, but I think I heard the recording. This business of what has the character of arising has the character of passing away. Now, this is not necessarily referring only to the limited notion of anicca as we understand it, but obviously cuts across all three characteristics. That's how I understand it, isn't it? That's how you get the Sotapati Phal, isn't it? So maybe two But the questions. first Sanyojana of Sakkaya Ditthi will be removed when the 5 khandhas are seen as not me, not mine. So that one can
कई जगह भगवान कहते हैं ना जो वो कि अनित्य संज्ञा के आधार पे बाकी संज्ञाएं पुष्ट हो सकती हैं. तो if you apply anicca to all the five khandhas in a very deep way, then one can see they're not really within my control. So an insightful person may be able to conclude that way. In fact, if you see in each of these cases, it is mentioned that these people are very intelligent. If you just see, go ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ वो अपने दोस्तों को डिस्क्राइब कर रहा है ना शुरू में. एक जस्ट प्लीज होल्ड इमे में भन्ते पन्या सम्मत्ता Okay. दी सहाय के ये they are not just from leading family. They are having good general wisdom, and they are my householder friends. They from घर के household friends. So there is a indication of their being somewhat wise. Yeah, right. And this is applied to everywhere. You can see here. It has been translated as leading. But I mean, it has figuratively tricky, but it will be interpreted more rigorously in that manner. Leading is probably not an appropriate translation of Punya Samhita. Yeah, not a very proper translation. I think कुलानंग would mean leading. कुलानंग कुल है ना, अच्छे कुल से है. उस कुल के हैं. कुलानंग पुत्ता. पुत्तों का मतलब होता है हाउस होल्डर. कुलानंग पुत्ता है, अच्छे खानदान से है, अच्छे कुल से है. No, कुल पुत्तो is generally used for householder. Plan. अच्छा 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 अच्छा. तो पन्या समता का जो ट्रांसलेशन है वो मतलब यहाँ पे तो उन्होंने छोड़ दिया इस लाइन में, तो पीछे दिया हुआ है एक जगह लीडिंग फैमिलीज, और पीछे मतलब नीचे करोगे तो स्क्रॉल इफ यू स्टार्ट गो टू द बिगिनिंग, या यहाँ है ना सो खो आय स्मतो इससे पन्या सम्मता घी सहायता. इसका ट्रांसलेशन उन्होंने कर दिया लीडिंग फैमिली. लीडिंग फैमिलीज. हिस्ट्री ऑफ यशास फ्रेंड्स, तो घी सहायता तो हो गया यशास फ्रेंड. जान अगर हम पदा हिंदी में पन्या समता घी सहायका को करना चाहें तो कैसे इसको कहेंगे कि प्रज्ञा, जिनका प्रज्ञावान जिसको बोलते हैं ना, उसके मित्र समझदार है ना, प्रज्ञा बहुत पावरफुल वर्ड हो जाएगा ना. कन्या इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ विजडम, जनरली समझदार लोग. जो पुब्बा अनुपुप्पकानम, these are from, this could be translated as leading. पुब्बा होता है ना पहले वाले. This पन्या सम्मता has been ignored in the translation. So anyway, the point you're making is that the ground was already fertile, and that's why it was possible. Yeah, I mean, the first householder to get become enlightened was Yasha. Obviously, he had tremendous power of that kind. अच्छा, फिर ये पैराडाइम वाला, sorry, please He's go. living in the same manner. आपको याद होगा पिछला डिस्क्रिप्शन था, 3 बड़े बड़े उसके लिए भी बनाए गए थे रहने के. कोई क्यों बनाएगा 3 महल किसी के लिए? अपने बेटे के लिए कोई 3 महल क्यों बनाएगा? So as to keep him engaged in those worldly activities. So it's a similarity with Prince Siddhartha's life is absolutely uncanny. Exactly same lifestyle he's doing. So that is able to explain the breakthrough. Transition from Yeah, okay. Now what about this framework used? ये बताइए थोड़ा. सोतापत्ति फल के लिए
फोर नोबल ट्रूथ्स का ये और जगहों पर भी आता है ना, दैट्स माय मेमोरी, इजंट इट? Yeah. I mean, in many places it is said that he has completed teaching, meaning completely broken through the Four Noble Truths. That itself is seen as complete for becoming a fully enlightened people. Now it obviously presumes that they have a background of good amount of background. In case of five bhikkhus, Buddha gave them the Anatta Lakkhana Sutta afterwards. After all of them became Sotapanna, which we read. Then they were given teaching of Anatta Lakkhana. So maybe here also the further instructed may be meaning that so as to remove the Asmimana. Basically, Anatta Lakkhana Sutta could be seen as something which removes the last traces of sense of self. It's just a guess. And so in that sense, जब ये कहते हैं कि the teaching unique to the Buddhas, then they are referring specifically to the ability to see unsatisfactoriness in that which appears to be satisfactory. Yeah. That's the principal difference between. Yeah. And once you see unsatisfactoriness, इसके प्रति आकर्षण, इसके प्रति आइडेंटिटी काफी खत्म होने की संभावना रहती है. So दुख आर्य सच्चा is a very powerful insight that pleasant experiences of the life are also suffering. That itself can cause nibbida, strong sense of disenchantment with the worldly pleasures. When I deeply see within myself, I can see there are still traces of enchantment of worldly pleasures. And then this also takes us back जो हमारा शुरू का discussion था, that upon enlightenment, when he feels that it's not worth teaching, it's basically this factor, isn't it? Yeah. Some prerequisite is very important. So when he says little dust, he's actually meaning this, which is in fact a very high sort of state of. In his definition of Dhamma is Vachatang Vejitabha Vinyohi. Vinyohi is a very powerful word. It means those who are wise, translated in that manner. Right, but it's actually referring to this thing of seeing unsatisfactoriness in that which is otherwise satisfactory. The ability to see that. Just to be pointed out. It's not self-evident. Pleasant things are unsatisfactory. It's not self-evident. So some accomplished master has to point it out to such a depth that it really becomes internalized. We can see that in our own lives when I investigate. Yeah, we tend to forget that pleasant things are suffering. We don't check within ourselves. It's really a big insight that pleasant things are unsatisfactory. What do you think? Isn't to be able to see? I think it's good to involve everybody in such an important discussion. We agree that to be able to see that present experiences are unsatisfactory and dukkha. It's quite tough. If we quietly sit down and investigate, are we able to see all present experiences as suffering? Or is it that when they change into suffering, then we see them as suffering? That's the point. Of course, when they change and show their nature, then how? But right at the
experiential point. काफी काफी साधना की जरूरत है उसकी। In fact, कई बार ये कहा जाता है ना that many of us come to dharma because of some suffering. I heard some teachers say कि वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो खैर as a result of suffering anybody, most people will look for a way out of it. But the real litmus test is, Yeah. do I come to dharma also when life conditions are really, Yeah. conducive? That's what happens. Then you are really able to. That's what happens when you go to, when we used to go to retreats and 10-day retreat, we have seen the rate of dropout after one course used to be 90%. Hardly 10% or even 5% or 10% would continue. Once the suffering falls down, they rarely continue because this truth has not been really penetrated. Dukkha has not been understood. It's a very powerful thing. Actually, most of the people stay away from Buddha's teachings primarily because they think it is all about suffering. Yeah, that's Because anytime you start discussing these things with anybody, yeah. they just get put off by the word Yeah. suffering. I remember when I was initiated to Vipassana by Darsa, I did two courses or maybe three courses. Three courses I did. But after that, I never went there. वो जो सकाय दिट्ठी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो सम्मा दिट्ठी को समझ ही नहीं रही थी। तो आपने जैसे कहा कि वो सफरिंग का मतलब ही नहीं था उस समय कि सफरिंग जो है वो हो रही है क्योंकि क्रेविंग बहुत ज्यादा थी हर चीज की, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दैट इज व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम। माय फॉल्ट, individual's fault actually. Not a fault really. That's the sankhara, strong sankhara, which are lying in the stream of consciousness. Whose fault? There's nobody here who's doing any fault. Yeah, It's actually carrying on and on and on. right. So as you work more, as the direction of the stream is changed, you become better. Experiences change and we become so-called, we become wiser. Isn't it? अभी भी है ना, मतलब some selected people, selected ones who have, like these people who are very initiated and who are कुलपुत्र हैं और ऑलरेडी इस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, तो ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि इस तरह you can see in our society today. I mean, there are many kulputras, but they are far, far away from all this. Because of the world, the way we look at the world. We're all seeking pleasures, seeking joy in the worldly pleasures. Any joy beyond worldly pleasures is not known. That's the point. When you get trapped, that's नॉर्मली तो है ना कि वर्ल्डली प्लेजर जितना मिल जाए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, yeah. तो उसमें तो कोई कमी लोग रखते नहीं है। हमारी डेफिनेशन सक्सेस की, the way we honor people, किनको ऑनर करते हैं? बिल्कुल। सारे इंस्टीट्यूशंस डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड किसको देते हैं? Those who have succeeded well in the money. Right. They may not be doing, for example, IIT, they may not be doing any technical work. He may have become a World Bank economist or become a good Flipkart, for example, or other business human, and they have developed got a lot of money because of business, and they're able to donate to institutions. All IIT then. Yeah, they become distinguished in that. Not those who became monks, for example. There are many IITs who became monks. I know them personally. Yes.
At least two I know personally. One was our student in department, other person submitted his PhD. He was consulting me about his PhD. And when he came for defense, he was in road. They don't become distinguished. Another IITian who was looking after the tribals, had gone there somewhere. Many. बिल्कुल जंगलों में रहते थे, बिल्कुल वो He was my unseen. hostel mate. वो मेरे हॉस्टल में मेरे से 2 कमरे दूर रहता था. So that's it. I was not to blame anybody. That's the worldview. That's the worldview. That's the worldview. Good. Let's Deepak, you चलिए. raised your hand. हाँ जी, सबको नमस्कार. जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है, और मैं खुद अपनी लाइफ को जब रिवाइंड करता हूँ तो बहुत सारे वर्ल्डली मैटर्स में मुझे लगा कि मेरे डिसीजन बड़े बेवकूफ़ी के रहे, लेकिन अल्टीमेट कल्मिनेशन वाज इंट्रोडक्शन टू विपस्सना एंड धम्मा. तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं प्रीवियस जन्मों के पुण्य भी थे जो साथ चलते आए, तो जो फ्रस्ट्रेशन मिली अल्टीमेटली उसका आउटकम बड़ा ही सुंदर रहा, मैं कहूँगा. और ये तो अल्टीमेट है ही जो हमारा एक्सपोजर हो रहा है. दिस विल लीड टू ultimate happiness and salvation from the cycle of birth and death. This is what I say. Sometimes it may appear a very zigzag way, but somewhere our punyas help us to come to this path. ये मेरा अपना रहा लाइफ का बहुत zigzag है. अभी भी बहुत कुछ है जो गड़बड़ है, लेकिन I take it in stride. That's the greatest benefit which I've got from this Sangha. Good. Let's go further. Lord of Death is calling. Let us. Yes. मार्ग कथा. अथ खो भगवाते भिक्खु आमन्तेसि मुत्ताहं भिक्खवे सब पासे ही ये दिव्या ये च मानुषा तुम्हें पी भिक्खवे मुत्ता सब पासे ही ये दिव्या ये च मानुषा चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं मा एकेन द्वे अगमित्थ देशेथ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्योसान कल्याणं सा अर्थं सा व्यंजनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेथ. Then the Buddha addressed those monks. I am free from all snares, both human and divine. You too are free from all snares, both human and divine. Go wandering, monks, for the benefit and happiness of humanity, out of compassion for the world, for the good benefit, happiness of gods and humans. You should each go a different way. Proclaim the teaching that is good in the beginning, good in the middle, good in the end, that has true goal and is well articulated. Set out the perfectly complete and pure spiritual life. There are beings with little dust in their eyes who are ruined because of not hearing the teachings. There will be those who understand. नहीं,
यहाँ से मैं फिर से पढ़ूंगा। संति सत्ता अपरजख जातिका अस्वनता धम्मस्य परिहायन्ति भविष्यन्ति धम्मस्य अय्यातारो अहंपि भिक्खवे येन उरुवेला सेनानिगमो तेन उपसंकमिष्यामि धम्मदेशनायाति। अथ को मारो पापिमा येन भगवातेन उपसंकमित्वा भगवन्तं गाथाय अज्ज भासि बद्धोषि सब्बपासे हि ये दिव्या ये च मानुषा महाबंधन बद्धोषि न मे समण मोक्षसी। इतना पढ़ लीजिए। दीपक इतना पढ़ आई दीजिए। थिंक ये पोएम कर लेते हैं पूरी। ओके, ऑलराइट। मुत्ताहं सब पासे ही ये दिव्या ये च मानुषा महाबंधन मुक्तों ही निहितो त्वमसि अंतकाति अंत लिख चरो पासो या अन्तलिखचरोपासो वायं चरति मानसो तेन तं बाधयिष्यामि न मे समणमोक्षसीति। रूपा सत्ता रसा गन्धा फोटव्वा च मनोरमा एत्थमे विगतो छन्दो निहतो त्वमसि अन्तकाति। अथ को मारो पापिमा जानाति मं भगवा जानाति मं सुगतो ति दुःखी दुम्मनो तथ्येवन्तर्धायिति। मार्कथा निठिता। I will go to Uruvela to Senigama to proclaim the teaching. Then the Lord of Death, the evil one, went up to the Buddha and spoke to him in the verse: You are bound by all snares, both human and divine. You are bound by the great bond. You are not free from me, monastic. I am free from all snares, both human and divine. I am free from great bond. Terminator, you are defeated. The snare is ethereal and it comes from the mind. With that I'll bind you. You're not free from me, monastic. Sights, sounds, tastes, smells, and tangibles, the mind's delights. For these I have no desire. Terminator, you are defeated. Then the Lord of Death, evil one, thought, the Buddha knows me, the happy one knows me, and sad and miserable, he disappeared right there. The account of Lord of Death is finished. सर ये अंत लिख चरो को इथेरियल लिखा हुआ है। अंतरिक्ष का मतलब आकाश होता है, जैसे इमेटीरियल है वो, इट्स नॉट ए मटेरियल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि कोई रस्सी बांधूंगा मैं तुम्हारे को, तुम्हारे मन के अंदर बांधा। ओके, बट पाली में अंत लिख चर ये भी आकाश आकाश की। अच्छा, या अंतरिक्ष। ओ अंतरिक्ष। उसमें से चांट करते हैं ना अंतरिक्ष, ये जो देवावाहन गाता है। हाँ, करेक्ट सर। अंतरिक्ष में विचरने वाला अंतरिक्ष चरो। हाँ, अंतरिक्ष में है, मतलब इट इज इमटेरियल, इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू कैन सी। स्काई जो है वो
दिखता है तो कुछ नहीं, and there's nothing called as, no thing called as sky. We give it, we say sky is blue as if it is a thing. ये बड़ी fundamental problem है ना हमारी perception की. We think of everything as a thing. हर experience को हम thing बना देते हैं. There is a very subtle problem. Prithvi Dhatu is a thing. Prithvi is Prithvi Dhatu, Vayu is Vayu Dhatu, water is Jal Dhatu, Agni is Teja Dhatu. That's not it. That's not. They're not things. Dhatus are not things. They're experiences. And all kinds of complications can arise from that misunderstanding. So probably the word dhatu refers to elements of experience. Yeah, it refers to elements. All Veda's teaching is not what you experience. He never talks about how the world is. It's not in terms of ontology. In philosophical terms, it is phenomenology versus ontology. Correct. And the moment we confuse between them, then we can come to wrong conclusions. And it's a very subtle confusion which many people continue इसको to जरा have. सरल भाषा में बताइए जो अभी बताया आपने. एक चीज होती है कि जो हम अनुभवों को डिस्क्राइब करते हैं, दूसरा होता है जो विज्ञान कहता है चीजें ऐसी हैं. तो वो विज्ञान का जो आधुनिक विज्ञान का जो समझ है वो है कि चीजों को बताएं. ये चीज क्या है, पदार्थ क्या है. पदार्थ में पहले एटम थे, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, अब वो भी नहीं रहे, अब फंडामेंटल पार्टिकल हो गए. पार्टिकल क्या है वो डाउट हो गया उसमें. ये तो चीज ही नहीं है. ये चीज ही नहीं है तो ये क्या हो रहा है. तो विज्ञान भी वही ले जा रहा है, बट उसको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है. भगवान ने उस दिशा में काम ही नहीं किया. उन्होंने कहा वर्ल्ड, व्हाट इज द वर्ल्ड, 6 सेंसेस ऑफ द वर्ल्ड. बात ही खत्म कर दी. 6 सेंसेस से क्या होगा, अनुभव होगा ना. दिस इज द वर्ल्ड विच मैटर्स टू यू इज द वर्ल्ड यू एक्सपीरियंस, पीरियड. बाहर क्या हो रहा है होने दो ना. तुम्हारे अनुभव में क्या आ रहा है वो तुमको परेशान करता है ना. और वही चीज जो वो संसार में जो चीज तुम्हें परेशान करती है दूसरे को खुद कर रही है. अब क्या कहोगे कि वो अच्छी है कि बुरी है. इसलिए वो कहते हैं इस पचड़े में ही नहीं मत पड़ो कि बाहर संसार की रियलिटी क्या है. The world is for you, for me the world is world I experience. एक अंधे के लिए there is no color. Finish. The world of the sight does not exist. Other worlds exist, yeah. इस बात पे भगवान बुद्ध ने जब निर्वाण सूत्र में लिखा है देयर इज नो जो गुड और बैड और देयर आर नो एक्सट्रीम. Good or bad, yeah. Good or bad. मतलब हाँ वो तो बहुत ही हल्का शब्द यूज कर लिया, लेकिन देयर आर नो ड्युअलिटी. बेसिकली इट इज जस्ट वन. No, ऐसा कहीं नहीं कहा. सर निर्वाण सूत्र में मैंने सुना सर. किस सूत्र में? निर्वाण सूत्र. हाँ, ये मैंने वो किसका डिस्क्रिप्शन है. वो संसार का डिस्क्रिप्शन नहीं है, निर्वाण का डिस्क्रिप्शन है ना. ऐसी कुछ है. भिक्षु क्या है. Nikhil, can you just put the Nirvana Sutra on the screen? It's very important question, I think. So good. Thank you for pointing it out. So let us have a look at it and understand. तो उससे कई बार उसको भी चीज बना दी, निर्वाण को भी हमने चीज बना दी, तो गड़बड़ हो जाएगी. ये नहीं है निखिल जी. आई डोंट नो दैट्स द लास्ट वर्ड. ये रहा सर है हमारे ना पास 16.
ये है ना बेटा, इसी की बात कर रही है ना? सर मैंने तो सुना था एक्चुअली, तो ये इसी बात की बात कर रहे हैं ना बेटा? हाँ जी, ड्युअलिटी की, हाँ जी। हाँ, ये डुअलिटी शब्द मत इस्तेमाल करो, ये है सुख। वो डुअलिटी वाला और सिंगुलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट वैदिक कॉन्सेप्ट है वेदांत। आई हैव डेली रिस्पेक्ट फॉर इट, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट दैट्स नॉट द बुद्धा's टीचिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या कह So, रहे हैं but दूसरे? Bhatta, before you describe this, you see, I know what Poonam is saying. Many people spin the Nirvana Sutra like this, Yeah. that it is pointing to non-duality. So I think it's important that you clarify that the business of duality, non-duality does not exist in the teachings at all. That's the In Buddha's teaching, that does not exist, of course. And you can see, this is the sutta कि आपने बात की है ना पूनम, यही कह रही है ना? तो क्या कहा जा रहा है भिक्षु है, that is अच्छी भिक्षु, yes, ajatam, which is unborn. Is there anything unborn in this world? अभूतम, अकृत्यम, असंस्कृतम, कुछ भी तो नहीं है इसमें। It's all describing an experience of full enlightenment. So it is an attempt to describe which is normally in normal language indescribable. Why he is doing so? ताकि लोगों में विश्वास हो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। That you can see कि अगर ऐसा नहीं होता तो संसार से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये है इसलिए संसार से मुक्ति संभव है। It's not describing the world, तो संसार से मुक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना? देखो, Okay, so that means there's no world. There's just yeah. nirvana. No, it's not saying there is no world. Please, again we're going to the other extreme. He says, what is the nature of the, what is the उसका असली स्वभाव संसार का क्या है? वो कहते हैं वो अनित्य है, दैट्स इट। और दुख है, दुख मतलब वो अनसेटिस्फैक्टरी है, आपको परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। और अनात्म है, उसमें एसेंस नहीं है, सार नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो अनित्य है, दुख है, इसमें सार नहीं है, सारहीन है। इस तरह से समझना चाहिए। एंड तो ये तो मैं दी इस वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वर्ल्ड ऐसा है, मतलब जो मैं दिख रहा है, जो मेरे अनुभव में आ रहा है, वो ऐसा है जी कि अनित्य है। और लेकिन जो वर्ल्ड, सर, जो हमारी पशु पेश रहती है, वो हमेशा ये रहती है कि ये करे या वो करे, या ऐसा हो या वैसा हो। तो देयर इज ऑलवेज, यू नो, फॉर एक दैट, एक दिस आस्पेक्ट। इज नॉट दिस इज नॉट द सुत्ता वी शुड रेफर टू फॉर डिसाइडिंग दैट कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना? ये सब तो उसके लिए नहीं है बेटा। दिस इज exalted teaching to inspire us to work in this direction, nothing more than that. इस सत्ता को हम साधना का माध्यम नहीं बना सकते, साधना के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। तो काइंडली सी, इसको अगर हम साधना का माध्यम बना लेंगे, कुछ है, कोई चीज है जो ऐसी है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बुद्धा's टीचिंग, आई एम नॉट सेइंग, आई शुडंट से गड़बड़ हो जाएगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बुद्धा's टीचिंग इज नॉट डिस्क्राइबिंग एनीथिंग कॉल्ड निब्बाना। There's no thing which is ajatam, abhutam, akattam, asankhatan. There's no thing possible. Nothing which you know in the world is of that characteristic. You can see it is a transcendent experience being described. And therefore, from this to derive a conclusion that this describes the nature of reality, not proper. सिर्फ इसलिए इंस्पिरेशन के लिए है कि भाई संसार से मुक्ति संभव है। संखार से मतलब इस कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड। सर, जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ये बोलना चाह रहे कि, मतलब अब ये तो मेरा लिमिटेड वर्जन ऑफ माइंड है, बट ये तो जो है अभी अजन्मा अभूत है, इसीलिए इसे जन्म, मतलब जन्मे भूत, मतलब फिर अगेन दिख रहा है ना कि जन्मा है, अजन्मा है। तो
जन्मा मतलब है because वो again this हम is है, also हम है ना, this and वी the आर that बॉर्न, वी आर yeah we are बॉर्न, what दिस फिजिकल वर्ल्ड इज बॉर्न, अब ये खत्म हो जाएगा, सन विल बी इज बॉर्न, इट विल फिनिश समडे, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज अजन्मा, दिस इज, दिस कैन नॉट बी ए थिंग कॉल्ड विच इज, किसी चीज को आप चीज कहेंगे तो वो अजन्मी नहीं हो सकती, वो असंकृत नहीं हो सकती, इट कैनॉट बी अनकंडीशनड, इट कैनॉट बी नॉट क्रिएटेड, it is an experience, it is a description of an experience, not a place, not a thing, so that is to be appreciated. I mean, I नहीं can सर understand. मैं एक मैं जो समझना चाह रही थी तो ये कि एग्जिस्टेंस है, जन्म की एग्जिस्टेंस है, इसलिए मतलब जो अजन्मा की एग्जिस्टेंस हाँ, कुछ बता भी रहे नहीं हैं। है ना इस संसार में, कुछ भी नहीं है ना अजन, वो तो बिल्कुल ठीक, तभी तो कह रहा हूं, वो हमारे संसार की चीज है ही नहीं, अगर संसार की चीज होती तो मार का रीजन नहीं हो जाएगा वो। अगर आप फिगर उसको ड्रामेटिकली बताना चाहें, मार जैसे भी हम पढ़ रहे थे, मार जो आया, उसने कहा, तुम मेरे बंधन से मुक्त कैसे हो जाओगे, तो कहते ये जो सारा सेंसरी डोमेन है, 6 इंद्रियों का डोमेन है, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, आई ट्रांसेंडेड इट, मुझे कैसे पकड़ पाओगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट टीचिंग, कि 6 इंद्रियों के इंटरेक्शन से मैं मुक्त हूँ, कोई मुझे बांध नहीं सकता, वो कोई भी इंद्रिय का विषय मुझे बांध नहीं सकता, बिकॉज आई एम फ्री, एंड दैट्स इट, दैट इज अवर कोर प्रैक्टिस, एवरीथिंग एल्स इज डिस्क्रिप्शन, so this should be seen as an inspirational teaching, कि हाँ, डोंट गेट डिसहार्टन कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कह रहे नहीं, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है, मैंने अनुभव किया है, तुम भी अनुभव कर सकते हो, ठीक है to see it in that light. Thank you. पूनम जी सर, शायद आई कुड रिलेट में भी वो शायद जो हम लोग बोलते हैं ना, फुट्टसी लोक धम में ही, वो जो लोक धम है, सुख दुख लाभ हानि प्रशंसा, उसी में वो जन्मा अजन्मा भी पुट कर रही है, ऐसा एहसास हुआ मुझे। वर्ल्डली में तो रहेगा पेयर, सुख दुख तो रहेगा, बट यू नो इन अदर सेंस, एक जिसको भगवान दुख मुक्ति बोलते हैं, वो सुख नहीं है, वो कुछ अलग ही है, वर्ल्डली दुख सुख से भी कुछ अलग ही चीज है वो, इजंट इट? इनिशियली तो हम इस ड्युअलिटी में, जब हम निर्वाण को, जो मैं समझ रही हूँ तो ये कि ड्युअलिटी में तो रहते ही है कि जन्मा अजन्मा या फिर दुख सुख, ये वाले में तो रहते हैं, लेकिन देयर इज बियॉन्ड आल्सो, दैट्स या व्हाट आई मीन, ठीक है कि इट्स एन इंस्पिरेशन टू अस टू Yeah. वर्क ऑन दिस सो दैट वी कैन अचीव, Yeah. मतलब जो भी है अचीव या नॉट अचीव। It is not a, that should be seen as an experience, because हमारा को या एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं होते ना, हाँ जी जैसे सामान्य कोई भी एक्सपीरियंस भी उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते ना, आप रसगुल्ले और गुलाब जामुन के एक्सपीरियंस में क्या डिस्टिंक्शन करेंगे, कैसे वो शब्दों में कैसे बताएंगे, तो यार खा लो पूछो मत, so that's a problem, this is a problem of language cannot describe all experience, and a transcendental experience which is beyond 6 senses, कैसे describe, and all attempts at putting it in description, they create some possibility of misunderstanding, तो फिर हम एक वस्तु, लेकिन एक, सॉरी मैं ये बात मेरे को ऐसी लगती है जैसे हम जो है एक पेडेस्टल में हो जाते हैं कि ये चीज ऐसी है, और उस पेडेस्टल से हम रखने के बाद फिर देन वी वर्क, एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं इट्स वेरी कौन सा बिल्कुल दिखा, मतलब पास्ट जो है बहुत ही वो है, यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, तो जो मतलब पेडेस्टल रखना इज अ गुड वे ऑफ, आप समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ, कि हम जैसे हमने ये बोला कि दिस इज समथिंग विच इज अचीव्ड बाय बुद्धा, and then we put some at the top of it, and then we try and strive towards
रीचिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल, और जो निर्वाण की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हम ऐसा करते हैं, दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग, जो मेरी लर्निंग के लिए, क्या ये इज इट अ गुड वे ऑफ लर्निंग? This is not this sutta does not have any learning aspect of it. It does not describe training. It does not describe the teaching. It describes the possibilities. तो हमको सेलेक्ट करना चाहिए कि इस जो अभी हमने पढ़ा था ना, भगवान की जो वाणी थी, इंटरेक्शन विद मार, दैट डिस्क्राइब द ट्रेनिंग, परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो। कैन यू जस्ट पुट इट अगेन, जो भी यहाँ हम रुके हुए थे। Yeah, this is not the path. We should be careful, है ना? That's how I think that's the mistake. इसको हम path समझ रहे हैं actually. Yeah, I can see where she's coming from. Many people are putting that as a path. Yeah, because many teachers describe it like that, no? वो awareness कर लो. That's the difficulty. This is the path. This is the culmination of the path, that sight, sound, taste, smell, and tangible and mind delights. For these I have no desire. That's it. Just put it. इसी को सामने रख लें. क्या मुझे साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टेंजिबल, माइंड, मन की डिजायर्स के प्रति अभी कुछ डिजायर है? अगर है तो मैं उस पर काम करूँ, और फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा, फिर मैं वेरीफाई कर लूंगा निर्वाण सत्य को। तो त्वमसि, अंत का, तुम्हारे को मैंने मार दिया है, हरा दिया है। Are we in a position to make this statement? That's it. That is enough for us to judge at what practice we should be doing. जब हम कहते हैं prominent संखारा देखो, ये देखो, what does it mean? It essentially means this. इसके भाषा में हम यही चर्चा करते आ रहे हैं ना हर बार, भाई अपने प्रोमिनेंट संखार देखो और उस पर काम करो। संखार कहाँ होगा? कहीं 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 इनके प्रति बंधन है, इनके प्रति आकर्षण है, या इनके प्रति विकर्षण है, विचवर वे। आकर्षण विकर्षण दोनों बांधते हैं, विकर्षण थोड़ा ज्यादा ही बांधता है। So we should distinguish between what is the teaching and what is inspiration. Thank you, Poonam, for raising this question. Very good. Very good. Thank you. So maybe we request Banteji for concluding this session. But this difficulty is quite prominent, no? Because many teachers will tend to mistakenly describe things. I have myself done it for quite some time, so I can easily empathize with that. Yeah, because it sounds very romantic. It sounds very good. Sounds very pleasing that we are all one. We are all, and all that is. I mean, it has its own value in terms of practicality, but it's not the spiritual path of the Buddha. I am again saying it's not the spiritual path. There are other traditions which have that as a spiritual path. Fine. We don't have any kind of quarrel with it. That's very true. Sir, should I ask something, sir? जी जी। ये अभी तक जो दोहा या लाइन है, छित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व बन मिला शरीरा, पंच तत्व बना शरीरा। तो इस लाइन में मैं अभी तक इन चारों को, आकाश को, हवा को, अग्नि को, ये थिंग समझता था। लेकिन आज मेरी समझ में ये आया कि थिंग न होने की बजाय ये सब धर्मा है इनके। तो दिस इज वेरी positive understanding for me. I think so. That is the teaching of the Buddha. I mean, I again keep on saying it because other traditions have different teachings, different interpretations. So we should not get confused with that. Yeah.
Bante or Okay, so just for everyone's information, आज शाम को I'll share some pictures and maybe also make some commentary. अभी वाटपानाना चार्ट का कथीना फंक्शन अभी खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, so we've got pictures from there. So शायद हम सबके लिए it might be interesting, useful to see के एक typical monastery में जो annual robe offering होता है वास के एंड पे वो किस तरह से होता है, उसके क्या विनय के सिलसिले में हम क्या उसमें सेरेमनीज करते हैं, कुछ कल्चरल सेरेमनीज हैं. सो इट माइट, आई थॉट इट माइट जस्ट बी यू नो गिवन दैट देयर इज अ मॉनेस्ट्री डेवलपिंग हियर आल्सो, हम सबके लिए इट माइट बी समथिंग sort of interesting to see. But शाम को I'll share those and Nikhil will put the announcement out for that today. So just the usual evening session and we'll spend some time looking at those things and maybe talking about it. So welcome. Arahan Samma Sambuddho Bhagavan Buddhan Bhagavantan Abhivadin Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassam Supatipanno Bhagavato Savak Sangho Sangham Namam. बंटे जी को हम सभी प्रणाम करेंगे. प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय प्रणाम. Thank you everyone for joining. Thank you so much. Thanks for this excellent session. Thank you. Thank you. very much. Thank you very much. Especially